अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एडिसपर्क्शन दोस्तों, मैं आज आपको PSY 404 यानी कि आप नॉर्मल साइकोलॉजी के एग्जाम प्रिपरेशन की सीरीज़ में वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम इसमें टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। इसके साथ हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना जो आज का ये चैप्टर है बगैर टाइम ज़ाया के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फोबिया होता है, इसको इरेशनल इंटेंस फेयर होता है। OCD is characterized by obsession and compulsion. PTSD develops after trauma exposure. Panic disorder involve panic attack. GAD involve excessive anxiety. Social anxiety disorder is fear of social situation. Acute stress disorder lasts less than 1 month. Separation anxiety is common in children. Compulsions are behavior performed to reduce anxiety. Relaxation techniques are used in treatment anxiety. Major depression disorder include persistent low mood. Bipolar disorder include mania and depression. Dysthymia is chronic mild depression. Mania is characterized by elevated mood and hyperactivity. Cyclothymic disorder involves mild mood swings. Seasonal affective disorder occurs in winter. Post-traumatic disorder affects mothers. Learned helplessness theory explains depression. Serotonin imbalance is linked to depression. Antidepressant drugs include MAOIs. Cognitive behavior therapy is effective for anxiety and depression. Panic attacks peak within minutes. Agoraphobia involves fear of open public places. Obsessive thoughts are intrusive and unwanted. Exposure therapy is used to treat anxiety disorder. Hallucinations are false perceptions. Delusions are false beliefs held firmly. Disorganized speech is a positive symptom. Negative symptom includes flat affect. Paranoid schizophrenia involves hallucination and delusions. Catatonia refers to motor immobility. Schizoaffective disorder combines schizophrenia and mood disorder. Onset of schizophrenia is usually adolescence. Early adulthood genetic factor play a major role. Dopamine hypothesis explains schizophrenia. Typical antipsychotic target dopamine. Ovulation is lack of motivation. Flat affect refers to reduced emotional express. Schizophrenia is more common in men. Prodromal phase is early symptom before full disorder. Residual phase involves remaining mild symptoms. Positive symptom includes hallucinations. Thoughts broadcasting is a type of delusions. Prescriptive delusion involves belief one is being harmed. Catatonic stupor refers to immobility. Disorganized behavior in schizophrenia refers to confused or inappropriate actions. Schizophrenia diagnosis requires 2 or more symptoms. Brief psychotic disorder duration 1 day to 1 month. Shared psychotic disorder is delusion shared by two people. Catatonic excitement refers to excessive movement. Cluster A personality disorder और odd eccentric, हमने यहाँ पे देखा था ना कि हमारे पास ABC क्लस्टर था, उसमें A वाले odd eccentric होते हैं. Antisocial personality disorder marked by lack of remorse. Borderline personality disorder shows emotional instability. Narcissistic personality involves grandiosity. Avoidant personality shows social inhibition. Dependent personality disorder shows reliance on others. Histrionic personality involves attention seeking. Obsessive compulsive personality disorder shows preoccupation with other and control. Dissociative identity disorder involves multiple identity. Dissociative amnesia refers to memory loss. Depersonalization disorder involves detachment from self. Anorexia nervosa involves severe weight loss. Bulimia nervosa, being and purge. Being eating disorder involves being
binge with purge. Sexual dysfunctions affect sexual response. Paraphilia involves atypical sexual interests. Gender dysphoria influence conflict with assigned gender. Substance use disorder include dependence and harmful use. Tolerance occur when need more for same effect. Withdrawal occur when substance stopped. Alcohol is a depressant. Cocaine is a stimulant. Opioids include heroin and morphine. Cannabis is classified as hallucinogen. Motivational interviewing aims to reduce ambivalence. CBT focuses on thoughts and behavior. Cognitive behavior therapy यानी कि CBT thoughts और behavior पर focus करती है. Psychoanalysis was developed by Freud. Humanistic therapy emphasizes self-actualization. Group theory provides social support. Family therapy focuses on family system. Pharmacotherapy involves drugs. Antipsychotics are used for schizophrenia. SSRI are used for depression and anxiety. Schizophrenia, mania, OCD, लेकिन इसमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो है हमारा ये होता है. और मूड स्टेबलाइजर इंक्लूड लिथियम्स. ECT is used in electroconvulsive therapy जो होती है हमारी, इसको ज़्यादातर बिजली के झटके देना कहते हैं, is used with severe depression. Systematic desensitization threats, phobias, exposure and response prevention threats, OCD, biofeedbacks help in controlling psychological responses. Relaxation techniques are used for stress and anxiety. Client-centered therapy was developed by Carl Rogers. Therapeutic alliance refers to trust between therapist and clients. Mindfulness therapy focuses on present awareness. Relapse prevention include planning strategies. Psychoeducations are teaching client about disorder. Supportive therapy focuses on enhancing coping skills. DBT is effective for borderline personality. Interpersonal therapy is used for depression. Motivational interviewing is mainly used in substance abuse. Relapse means return to symptoms. Effective therapy requires trust and collaboration. अब इम्पोर्टेंट जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिफाइन एबनॉर्मल बिहेवियर. सेकंड, व्हाट इज DSM, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल. डिफाइन एंजाइटी डिसऑर्डर. What is obsessions? Define hallucination. What is delusion? Define personality disorder. What is dissociation? Define tolerance. What is CBT, cognitive behavior therapy? अगर आप परेशान है कि इसके आपको आंसर कहाँ से मिलेंगे तो मैं इनके आंसर पिन कमेंट में लगा रहा हूँ, तो काइंडली कमेंट सेक्शन जरूर विजिट कीजिएगा. वहाँ पर पिन कमेंट में आपको इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग के आंसर मिल जाएंगे. और वो विजिट करने के बाद जब आपका पेपर हो जाए तो उसके बारे में मुझे अपनी कीमती राय का जरूर दीजिएगा. और इसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको और भी किसी सब्जेक्ट के इस टाइप की वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लॉन्ग की तरफ आते हैं. एक्सप्लेन मॉडल ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर. डिस्कस एंजाइटी डिसऑर्डर. एक्सप्लेन मूड डिसऑर्डर. डिस्क्राइब शिज़ोफ्रेनिया एंड इट्स टाइप्स. डिस्कस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्लस्टर्स. एक्सप्लेन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. डिस्कस ईटिंग डिसऑर्डर. Explain substance-related disorder. Describe psychotherapy approaches. Role of DSM in diagnosis. इसके साथ ही आज का चैप्टर हम क्लोज करते हैं. उम्मीद है आपको समझ आया होगा. अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. तब तक मिलते हैं आपको नई वीडियो में.